बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0। तो अब आपने जो टाइप्स पढ़ी हैं उन पर ज़रा गौर करें आप। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम अरकान, तमाम एंट्रीज 0 हों, वो क्या कहलाता है जी? नल मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। देयरफॉर ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। सेकंड की तरफ चलते हैं जी। बी 2 3 4। तो बी में मुझे जो नज़र आ रहा है वो है जी एक रो नज़र आ रही है, 1 रो। बी मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती थी उसको हम कहते थे रो मैट्रिक्स। देयरफॉर बी इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सी में है जी 4 0 6। तो सी जो मैट्रिक्स है इसमें ओनली 1 कॉलम है। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डी, which is 1 0 0 1। ये जो है यूनिट मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके डायगोनल में रुकन जो है, अरकान जो है वो 1 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो उसे हम क्या कहते थे? यूनिट मैट्रिक्स कहते थे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे। दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट ई, विच इज 0। तो ई में ओनली 1 एलिमेंट है विच इज 0, सो इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ये पहले हो चुका है, नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम अरकान 0 हों वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। एंड लास्ट इज एफ विच इज़ 5 6 7। तो इस एफ मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम है, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। Moving towards second question. Question number 2. From the following matrices identify square matrix, rectangular matrix, row matrix, column matrix। तो बारी बारी में ये लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं। तो इसी क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो जी -8 2 7 12 0 4। तो अब इस मैट्रिक्स पे ज़रा आप गौर करें तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं?
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है 3 0 1। तो ये देखें दोबारा पहले क्वेश्चन की तरह ये है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ओनली वन कॉलम है, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। मूविंग टूवर्ड्स थर्ड पार्ट, ज़ीरो सॉरी 6 - 4 3 - 2। This matrix has 2 rows and 2 columns. A matrix having 2 rows and 2 columns, same number of rows and same number of columns is called square matrix. Square matrix. Next, one 0 0 1. So the elements of the diagonal are 1. A matrix with diagonal having element equal to 1 is called identity matrix. Identity matrix. अगर डायगोनल में जो अरकान है वो 1 की इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इसे। फिफ्थ, वन टू थ्री फोर and 5 6. So this matrix has 3 rows and 2 columns. Number of rows are not equal to number of columns, so therefore it is called rectangular matrix. Rectangular matrix. Sixth part, which is 3 10 - 1. So this matrix have only one row. इस मैट्रिक्स में एक रो है, so therefore it is called row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. Row matrix. Moving towards seventh part, 1 0 0. So this matrix is also called column matrix because it has only one column. Column matrix. Eighth part, 1 2 3 -1 2 0 0 0 1. So this matrix has 3 rows and 3 columns, so therefore it is called square matrix. A matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. Ninth, 0 0 0 0 0 0. So this matrix have all the entries equal to 0, which is known as null matrix. Question number 3, from the following matrices identify diagonal, scalar, unit, which is also known as identity,
matrix. Four zero 0 4 ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल में सेम एंट्रीज हों उसे हम क्या कहते थे? स्केलर मैट्रिक्स कहते थे। अगर एंट्रीज इक्वल टू 1 हो तो आइडेंटिटी, और अगर सेम हो तो स्केलर मैट्रिक्स. सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स. Moving towards next, P, which is 2 0 0 minus 1. So this is diagonal matrix because in the diagonal there are different elements 2 minus 1 and other elements other than diagonal are 0. So this is diagonal matrix. Diagonal matrix. C 1 0 0 1. So this is identity or unit matrix because the elements in the diagonal are equal to 1. A matrix having diagonal element equal to 1 are known as unit matrix. Unit also known as identity matrix. Next, D 3 0 0 0. So this is diagonal matrix because in the diagonal there is at least one element must not be equal to 0. So 3 is not equal to 0. So therefore it is called diagonal matrix. Diagonal matrix. E and the last one 5 minus 3 0 or 0 1 plus 1. So first of all we will solve it. 5 minus 3 equals to 2, 0 0 1 plus 1 equal to 2. The diagonal elements are equal to 2, or you can say the diagonal elements are same. A matrix having diagonal elements same is called scalar matrix. Scalar matrix. तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 4. Find negative of matrix A, B, C, D and E. नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं. हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं. तो A equals 1 0 minus 1. The negative matrix of A is minus A. So we have to multiply the right side of A with minus 1. So that minus 1 will multiply with every element of minus A. Minus 1, 0 doesn't have any sign, and minus 1 will convert to plus 1. So this is negative matrix of A. Similarly, B, which is 3 minus 1 2 1. So we will multiply the both sides of B with minus B. B multiply every element of B with minus 3. Minus sign minus 3 1 minus 2 minus 1. So this is the negative matrix of B. Similarly, C
2 6 3 2. Negative matrix of C is minus C. Multiply every element with minus, so sign will change. All positive integers are converted into minus. Next, D minus 3 2 minus 4 5. So minus T 3 minus 2 4 minus 5. And the last part E, which is 1 minus 5 and 2 3 minus E minus 1 5 minus 2 minus 3. So this is very simple question. Moving towards question number 5. The statement of the question is find transpose of each of the following matrices. तो इस क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है. द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 1 minus 2. सो ट्रांसपोज लेते हुए हमने क्या करना है जी, कॉलम्स को मैट्रिक्स में, कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है और इसे हमने डिनोट करना है AT के साथ. तो इस कॉलम को हम रो में लिख देंगे 0 1 minus 2. कॉलम को रो में लिख लें या रोज़ को कॉलम में लिख लें, एक ही बात है. नेक्स्ट B, which is 5 1 minus 6 5 1 minus 6. So transpose of B 5 1 minus 6. Similarly C 1 2 3 2 minus 1 0. CT फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखें 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 minus 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में. रोज़ को कॉलम में लिख लें या कॉलम्स को रो में, एक ही बात है. D 2 3 0 5. डिनोटेड बाय DT. अब कॉलम्स को हम रो में लिखते हैं. फर्स्ट कॉलम इन फर्स्ट रो 2 0, सेकंड कॉलम इन सेकंड रो 3 5. So this is the transpose of T. Similarly E, which is 2 3 minus 4 5. बिल्कुल D की तरह ये भी. अब कॉलम्स को रो में लिख लेते हैं. तो 2 minus 4 2 minus 4 and 3 5. Next and last one F 1 2 3 4 implies FT. So one first row in first column, second row in second column. Very easy and simple question. Moving towards the last question of this exercise, question number 6. It has two parts. Given that matrix A is equal to 1 2 0 1 1 2 0 1
and we have to prove this. Transpose of A whole transpose is equal to A. The double transpose of A is equal to A. So we will take the first transpose, first row in first column 0 1 2, second row in second column, again taking transpose of both sides. So first row in first column, second row in second column. आप देख सकते हैं कि ये दोबारा ए मैट्रिक्स आ चुका है और यही हमने प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमिलरली बी मैट्रिक्स भी इसी तरह आपने सॉल्व करना है, विच इज़ 1 1 2 0। प्रूव करना है जी बी टी whole transpose is equal to B. So first of all we will take BT 1 1 first row in first column, second row in second column, again so first row in first column 1 2 and second row in second column. So you can see it again come, it will again the same is equal to B. So this is the required statement. I hope कि आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।